Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone. Thank you for joining this event, which inshallah will be something of beneficial. Inshallah, क्योंकि इसके अंदर we will be learning how we can enhance our LinkedIn profile, how we can start looking for jobs. आजकल का ज़माना is all about technology, all about online job fulfillments, and current market everywhere, international, local, is looking for online systems. So inshallah, this will be something beneficial, and LinkedIn has helped many people land the next job. So आप लोग सब inshallah will benefit from this, inshallah, and we have an amazing speaker with us today. And this special masterclass is by Telangana NRI Forum, which is a forum dedicated towards not only just Telangana people, but also Indians all over the Gulf and even back in India. To start the proceedings and before we start any activity, let me call on our brother Imtiaz Sheikh to recite a few verses, and with that we'll start our proceedings, inshallah. Imtiaz Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible? Yes, Imtiaz. Please go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله خير. Jazakallah khair, Sheikh Imtiaz. Bismillahirrahmanirrahim. जैसा कि आप लोग जानते हैं ये this session is by Telangana NRI Forum, which is a unique forum, and the one who is leading this, जो ये सब देख रेख कर रहे हैं और यानी कि जिसके सरबराही में ये तेलंगाना NRI फोरम चल रहा है, वो अब्दुल जब्बार साहब हैं. और आई वुड लाइक टू इनवाइट अब्दुल जब्बार अन्ना जिसे कहते हैं, to mention a few words of the forum and to enlighten us about the forum. Abdul Jabbar. Jazakallah khair, Brother Yasin. I would like to welcome you all on behalf of Telangana NRI Forum. And I'm really thankful for Brother Furquan, who has given an opportunity to these things to learn for the community support and to getting this job opportunities to avail to the LinkedIn informations. So let me tell you that regarding the Telangana NRI Forum activities, Telangana NRI Forum has established 2013. So we are all over the kingdom, our chapters all over the kingdom. We are into the social real ground workers, and we are working 24/7 all over the chapters. We are working for NRI supports and basically for the Hajj volunteers, and for last 14 years we are doing the Hajj volunteers volunteer work, and we are working for the social causes, for the social work, for connected with the registered with the Indian Embassy and the Jeddah consulates and all these things.
not only there and back to Telangana government. We are working with closely with other non-political and non-political people also for the supporting to the NRI issues and the repatriation of the dead bodies and the processes for all the support of the blue collar job workers for the labor issues and the sponsor issues. We are supporting for all any kind of things. And anybody has any issues that you can contact us and you can reach us for 24/7. Okay, we will share the contact numbers as well. And once again, I would like to thank you all for participating this Zoom meeting, and a special thanks for all our today's speaker and our coordinators. And thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you very much, Abdul Jabbar, for that introduction. That's just a snippet of the work that's being done by Telangana NRI Forum. And we are actively working, as Mr. Abdul Jabbar has mentioned, on ground over here in different Gulf regions and back in India as well. And we not only are supporting just the Telangana people, but also Indians or with everyone with on the open hearts. So if you have any concerns, if you want to join with the cause, you are most welcome to join us and be a part of the cause. One such initiative is today's masterclass by none other than Syed Furquan Ahmed. Before I introduce him, I want to share a few details about him. And I really found his LinkedIn profile to be something very interesting. The way he portrayed it, the way he has written it down. And I'm really interested and intrigued in listening to today's session because Syed Furquan Ahmed is a tech and AI enthusiast. He is also the founder and CEO of LAS Adventures and also educationist.ai, which is an AI website. He has been a Toastmaster and is a professional speaker as well, a graduate in computer science from JNTU, presently serving as a senior project manager in Expert, a company in Riyadh, KSA. Please put your hands together to welcome Syed Furquan Ahmed. Mr. Furquan, the floor is yours. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Brother Yasin, for that nice introduction. And thank you so much, Abdul Jabbar Saab and Imtiaz Saab, for inviting me for this forum. It is really a pleasure for me to present whatever the knowledge I learn or whatever the things which I keep seeking for. And it is an honor for me that I am able to share something that's something really that makes me feel comfortable when I do something like this, where people find, even if one or two of them get a job with my sessions, I feel pretty satisfied, and that's what it keeps me moving, right? So with that aim, I started my company. We have floated, just a quick introduction about myself, as Brother Yasin has already mentioned. I wanted to just elaborate on what kind of work I usually do. I am, apart from the regular job, I'm also a senior project manager as a full-time job. But at the same time, I dedicate my free time for my LAS Adventures. That is the startup that I initiated along with my brother. And Alhamdulillah, we are doing pretty good. And we have launched one website already, that is learnandsupport.com. Which is a free courses website where you will find all the courses, and you learn from that. And if you find it beneficial, you can donate any amount, and that donation we will use for helping the underprivileged students who cannot afford education in India, right? तो हमारा मकसद ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज शेयर करें, और लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कुछ डोनेशन करें, और उस डोनेशन से वी आर नॉट आस्किंग फॉर डायरेक्ट डोनेशन, वी आर गिविंग समथिंग एंड वी आर आस्किंग फॉर द डोनेशन. इट्स नॉट लाइक just appeal for a donation. Unlike other platforms, we are focused towards helping people by providing them some value to that. So that's what one learnandsupport.com is. And the second initiative that we have taken is educationist.ai,
that is more towards the career coaching. It is an AI-powered career coaching. And without much taking your time, inshallah, we will soon launch that. When we launch that, inshallah, you will get to know about it. But presently, it is under development. And as soon as we launch it, inshallah, it will be, it's a business model. I believe in making some self-sustainable models where you are getting it from the business model and you're supporting the needy. That's what we believe in, and that's how the Last Adventures came into existence. That's a brief about it. Now, without much wasting your time, I know you're all excited to listen to how you can get a job using LinkedIn. Before proceeding further, I just wanted to quickly confirm whether my screen is visible and my voice is clear. Is there anything that you want to make it more clear? My screen is visible, right? And my voice is clear, I hope. Yeah, it's visible, and you can make your voice more louder. All right, I will try my best. Thank you. I hope the voice is little clear now. Is it any better? Yes, it's better now. Great, thank you so much. So let me quick start why this session and what are the topics we will cover. First of all, the thing is LinkedIn is such a powerful platform. We all know about the power of LinkedIn, right? LinkedIn is a professional social media platform. Unlike Facebook and Instagram, LinkedIn is a professional platform where there are 900 million users worldwide, and it is for highlighting your professional career, your experiences and skills, and it allows you to connect with other professionals, and you can follow the companies, you can join groups. It offers tools for the recruiters and employers to find and hire candidates. There are many things that LinkedIn, the power of LinkedIn, if you keep exploring the power of LinkedIn, you will be astonished to see how it can help in various different areas. हम इसके पावर को समझ नहीं सकते क्योंकि हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते. But my job is within this limited time, inshallah, I will try my best to cover and to unleash as many things as possible, right? And at the same time, we will also use the power of ChatGPT. Most of you might not know what ChatGPT is because we stay in Saudi Arabia and we are the ChatGPT was not allowed in Saudi Arabia. So basically, what I guess is most of the users here don't know about ChatGPT. If you know it, just say yes or no. अगर मालूम है तो yes बोलिए, नहीं मालूम है तो no बोलिए. ChatGPT. I hope the chat window is open for all. Right. So there are some yes, there are some no. Yes. Have used a few times. Yes. So majority is yes. That's a great thing. So most of you might know already, but some of you don't know. So what I will do is I will quickly give an introduction about the ChatGPT itself, like what exactly ChatGPT is. ChatGPT एक simple एक messaging app है. ठीक है, अगर आपको बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में मैं समझाऊं इसको, तो एक सिंपल मैसेजिंग ऐप है जहां पे आप अपना like Google, right? When you type in Google, you will get some website links. But ChatGPT is more advanced and more AI powered, artificial intelligence powered एक चीज है जहां पे आप अपनी जरूरत की कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो the population of Indians in Saudi Arabia. एक थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं. Something is wrong. Please try again later. Okay. You can just see that when you type some question, it will give you an approximate answer. आप जो question पूछे इसके हिसाब से आपको एक answer मिल जाएगा, right? So this is what the answer is. I don't have access to the real-time data, because it is fed with the data until September 2021. That's a different thing. To obtain the most popular fed, it is not giving more appropriate answer. That's a different thing. So there is a thing called prompt engineering. आप जितना अच्छी तरीके से आप इस ChatGPT से बात करेंगे उतना अच्छा आपको response आएगा. Right? We will see how we will optimize our LinkedIn profile
with the help of sometimes ChatGPT as well, so that the ChatGPT can help us in building a lot of things. There are dedicated sessions which I conduct on ChatGPT itself. I have been conducting sessions on Power, how to use ChatGPT. For one full session, it was dedicated for creating the CV and all those things. But as we have very limited time, and my LinkedIn funnel framework usually takes more than 4 hours, I think it's difficult to cover all those areas. So what I will do is I will start with LinkedIn, the profile itself. So LinkedIn ka agar aap power dekhen, let me go back to this again. It is one of the most powerful areas. What are the topics that we are going to cover? This is what it is. You will find the advantages of LinkedIn, profile building and optimization. I will introduce you to the importance of keywords and how to find the keywords. Job searching technique is something that we usually don't understand, and how we can get it. We will find that job searching techniques. There are some cool tips and tools or hacks that we can use. I will show you some Chrome extensions that can be benefited. All right. And after that, we will also have the Boolean search, networking, inbound and outbound. We will understand the updating the CV based on your LinkedIn profile, the importance of content creation, how to create a great effective profile, right? Content कैसे effective content कैसे बनाना है, mentors कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर आपको कोई mentor की जरूरत है तो how you can find your mentors, seeking the effective advice from the mentors, reaching out to potential recruiters. And in bonus, we will also understand how we can use ChatGPT as a job assistant. This is overall what I presume will be covered, inshallah, in this limited time of 1.5 to 2 hours. Most probably we will dedicate some portion of our time towards the end for having the Q&A session, right? Just to make sure the questions which you might have, we can cover that as well. So I usually talk about the funnel framework. Why do I call it funnel framework? Because if you see here, I designed this funnel, this framework. This is an entire framework in Miro. Miro is a software where you will have the mind maps and all. So there is a broader criteria जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. LinkedIn प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, सर्चिंग टेक्निक्स यूज करना, नेटवर्किंग करना, all these things you will use it. Then you will narrow down to build it more effective and more efficient. You will start applying, people start reaching out to you, you will create the content, all these areas. So जैसे जैसे आप narrow down होते जाते हैं, जैसे जैसे आप 360 degrees approach फॉलो करते हैं LinkedIn को हर तरह से, मतलब जॉब एक ऐसी चीज है जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं फाइंड करने के लिए. Because I am into this field and people regularly reach out to me, I face it really difficult, and I really feel sometimes myself so helpless that I cannot support so many people, because there are many people who cannot find the right way of finding the right job, right? So this is the reason why I came up with this framework, and I thought let's use this power. Let's use the 360 degrees angle of utilizing LinkedIn to the best way possible, right? That's how we will make sure our LinkedIn profiles are very much benefited. Why this framework works? Because it is an outcome of the extensive research that I've done. Now, there are a lot of LinkedIn mastery courses I've personally taken just to make sure I can help as many people as possible. This is the tried and tested approach which has helped many people. Alhamdulillah, there are many success stories when people message saying that I got a job from LinkedIn. I really feel like Alhamdulillah, something has been achieved. Now, which gives me a self-satisfaction, and which ultimately gives me inshallah, I hope it will help me in my akhirah as well. That's a belief I personally have, and that's how I keep this keeps me motivating to keep going with these sessions. Although presently I am in middle of launching my website in the next coming few weeks, but still I thought this is the passion, I should not leave it. So I thought to take out some time for this as well. Inshallah, I hope this will be helpful for everyone. So fine, but there are few things that I would like to clear, because in every session I wanted to make sure these disclaimers are presented so that
you all know what this workshop is and who this workshop is for. अगर आपके पास great skills है या आप अपने skills को build करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो then this workshop is for you. अगर आप perpetual learner है और constant knowledge seeker है, only then this workshop helps for you. If you are not a procrastinator and if you are not an action taker, अगर आप ये सेशन ले रहे उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो प्लीज अभी सेशन छोड़ के चले जाइए. इट विल नॉट हेल्प यू. अगर आप एक्शन टेकर नहीं है, इफ यू डोंट टेक एक्शन, ट्रस्ट मी, दिस वर्कशॉप और thousands of such workshops will not help you in your career, right? This is very clear. I just wanted to be very clear for you. आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं. अगर आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे तो प्लीज अभी छोड़ के चले जाइए, बिकॉज आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और we can have a much better conversation, right? I'm sorry if that hurts, but that is what the fact is. If you're not an action taker, this doesn't work for you. You should be pretty serious about your career and goal, and you should be brave enough to take some small and calculated risks. ठीक है, ये सारी चीजें अगर है आपके पास तो इंशाल्लाह this whatever the techniques or whatever the things that we are learning here will benefit you in some or the other way. Without much ado, I will just Brother quick. Furquan, sorry to interrupt you. Sorry. Can you please make it in a slide mode, full screen? All right. No, I'm done with the slides now. Inshallah, we will have a practical session. Perfect. Okay. Yeah. So now I'm back to LinkedIn. Here where we are going to start our LinkedIn session, right? The first and foremost thing every one of you need to do is using this tool here, this public URL, profile public URL. What you can do is you can simply click on edit. अब पहले तो आप सबके पास, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सबके पास LinkedIn प्रोफाइल होगा. अगर नहीं है तो प्लीज क्रिएट वन, and if you already have one, then make sure all the criteria, initial criteria has been qualified from the intermediate level until the from the basic level to intermediate level until the full जो 5 stars होते हैं वो 5 stars लेने की कोशिश कीजिए. उसके बाद आप ये steps follow कर सकते हैं. First of all, when you go to your profile, by default it looks like this, right? By default it looks like this, and when you click on your profile picture, यहाँ पे on top आपको एक profile picture नजर आएगा. When you click on that profile picture, it will take you to your profile directly, right? Here is where your profile is, and what you can do is you can click on edit URL. जैसे ही आप ये छोटे से icon, I hope you can all follow me, right? You can all follow where I am clicking and what I am doing. This is where I am clicking just to make sure I am editing my profile. यहाँ पे एक दूसरा विंडो ओपन होगा where you can edit your profile randomly. अगर आपके LinkedIन प्रोफाइल में एक रैंडम नंबर्स होंगे, राइट? तो वो रैंडम नंबर्स हटा के उसको आप एडिट करके एक नाइस प्रोफाइल नेम दे सकते हैं. जैसे मेरा नाम सैयद हाइफन फुरकान अहमद hyphen के साथ में दिया. Even I can remove the hyphen, without hyphen also it works. So all I need to do is I just need to make sure the profile link is very clean and clear. If I have this clean and clear LinkedIn profile, I can share it on my CV. I can add this on my CV. I can share it with any potential clients. I can share it anywhere whenever any recruiter is requesting for it. It looks very easy and very clear, right? So that is the reason what I suggest is make sure you edit your URL. The second and most important thing is to have a nice profile picture. Profile picture का बहुत importance है. अगर आप यहाँ पे देखें साइड में, मैं कुछ अगर किसी का प्रोफाइल आप विजिट करते हैं, say for example a recruiter is visiting your profile, they visiting someone else profile and your profile is shown here. You can see that there are few people whose photo or image is visible, right? उनके नाम के साथ उनका फोटो विजिबल है. तो अगर आपका इमेज, आपका प्रोफाइल पिक्चर क्लियर है, तो you are representing yourself, and having a professional pic on your profile picture is really important. You can have a very nice front faced professional, जरूरी नहीं है सूट पे ही हो, कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल पिक हो आपका जो आप रिप्रेजेंट कर सकें और प्रोफाइल पिक्चर पे रख सकें. बिकॉज योर आइडेंटिटी इज योर फेस, राइट? आपके फेस से आप आइडेंटिफिकेशन आपका होगा. अगर आपके प्रोफाइल पिक एम्प्टी है या कोई रैंडम पिक है,
तो then recruiters might not find it interesting, or they might not even consider your profile viewing further. So इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रोफाइल पिक्चर को जरूर अपना अच्छा बेहतर बनाइए. अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना, एक प्लेन एंड सिंपल बैकग्राउंड रखिए, राइट? जैसे मेरा बैकग्राउंड वाइट है, इस तरह से आप प्लेन एंड सिंपल बैकग्राउंड रख सकते हैं. That's how you can make sure your profile picture is very neat and clear. एक टूल है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, remove.bg. बहुत सिंपल और सिंपल इजी टूल है जहां पे आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जस्ट विद इन वन क्लिक, राइट? अब से फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी रैंडमली एक पिक अपलोड कर रहा हूं यहाँ पे. फाइन, व्हेन आई एम अपलोडिंग it will just remove my background. Let me take some pic like this. कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, और let me take this picture. ठीक है, I have generated this using the Mid Journey, and if you see this was the original pic, and this is the removed background. Simply within one click, within few seconds, you can get your clean and clear profile picture and you can upload it. डाउनलोड कर लीजिए, एक HD फुल इमेज आप फ्री वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं. अनलिमिटेड डाउनलोड्स फॉर 500 to 500 by 500 preview image कर सकते हैं. So that would be pretty much sufficient, right? That's how easy it is. So make sure you have a very nice professional background professional picture for your LinkedIn profile. And then there is a requirement of having a nice banner as well. मेरा banner बहुत अच्छा नहीं है, because I didn't work much better on this banner, because एक random pic डाल दिया मैं. But you can make sure this banner is utilized in the best way possible. आप canva.com use कर सकते हैं. Canva, I guess most of you already know what Canva is. Canva में आप कई सारी चीजें, server down है. Anyways, Canva का server down है. I would have showed you what you can do on Canva. Anyways, you can visit this canva.com and you can find, you can make LinkedIn banners there. एक अच्छा banner मतलब आपके प्रोफाइल से या आपके फील्ड से रिलेटेड आप कोई ऐसी चीज जो आपको रिप्रेजेंट करता है. से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ए बिजनेस एनालिस्ट और इफ यू आर ए रिएक्ट नेटिव डेवलपर, तो आपका वो जो डेवलपर वाला एंगल है वो चीज रिप्रेजेंट करना इस बैकग्राउंड पिक्चर पे, राइट? आई सेलेक्टेड दिस पिक्चर बिकॉज एजुकेशनिस्ट, आई वांट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एजुकेशनिस्ट, एंड दैट इज द रीजन आई थॉट टू हैव अ बुक which is giving you a lot of knowledge. So just I put it there. बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता कि ये background banner है, but you can make it one of the best banners that can represent yourself. See, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट करते, रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल पे विजिट करते just to make sure you are a perfect fit for their network, right? For their job role or something. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज मैं ये बताना चाह रहा था, बिफोर इवन डूइंग एनीथिंग, बिफोर क्रिएटिंग योर सीवी, बिफोर अपडेटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिफोर एनीथिंग, यहाँ पे एक चीज आपको अपने आप से क्लैरिफाई करना होगा. ये शीट मैं सबसे शेयर करूंगा ताकि आप सब, लेट मी जस्ट ऐड दैट टू द चैट बॉक्स so that you can all take the reference for this sheet. I'm just sharing it here in the link. ये आप एक रेफरेंस के जैसा ये इसको ले लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए इसका. You can make a copy by taking file, make a copy, right? तो ये सबके लिए ओपन है. मेरे ख्याल से someone has already in, people are started joining in as anonymous. Anyways, what you can do is you need to answer. आप सबसे गुजारिश है कि आप इन सारे क्वेश्चंस का पहले आंसर दें. सबसे पहले तो आपको ये आंसर करना होगा, व्हाई आर यू स्टार्टिंग ए जॉब सर्च? इज इट टू फाइंड मोर फुलफिलमेंट डे टू डे, टू मूव अप और गेट प्रमोटेड, टू हैव मोर वर्क लाइफ बैलेंस? ये सारी चीजों को आपको पहले तो आंसर करना होगा. यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स डाल दीजिए, एक कॉपी ले लीजिए आपका और यहाँ पे रिस्पॉन्स डालना शुरू कर दीजिए. दिस एक्टिविटी इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ, व्हाट यू आर, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब. ठीक है, आपका फिर सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको एक थोड़ा सा वाज़े तौर पे आप ये कर सकते हैं कि
किस एक एस्टिमेशन आपका, एक ड्रीम या आपका जो भी एक टारगेट जॉब सैलरी है, राइट, वो सैलरी को आप एक अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के उसके हिसाब से आप रेस्पॉन्स दीजिए। फिर इसके बाद उस यू हैव टू नो हु डू यू नो, आपको कौन जानते हैं, आप किसको जानते हैं। अब से फॉर एग्जांपल, अब यासीन, ब्रदर यासीन इज समवन whom I know from the Toastmasters, because we met together in some Toastmasters club, and we know each other. So for me, so who are the people who I'm in your network for a project manager in Yasin Bhai's company? He can refer me because he know that I am a project manager, I'm a PMP certified project manager, and I am good at the skills, right? तो ये आपको नेटवर्क, आपका नेटवर्क कौन है और आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आप क्या क्या डिसीजंस लेना चाह रहे, अकाउंटेबल, who would keep you accountable and encourage you a job search, ये सारे चीजों का आंसर देना बहुत जरूरी है। आपको ये रेस्पॉन्सेस यहाँ पे देना होगा। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी यहाँ पे लोग कॉल पे हैं, सब अपनी अपनी शीट को ले लीजिए अभी। प्लीज डू नॉट गो ओवर द शीट बिकॉज यू माइट मिस सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। I will quickly jump for the other topics. You can go ahead and you can start responding this after this session. I request, please do not use this session for making any answers or making any copy. अभी फिलहाल के लिए रुक जाइए ताकि आप concentrate कर सकें what I am presenting at the moment, right? See, there are some Chrome extensions that you can use, right, for your profile building. I have these two Chrome extensions that I really feel this is important. Career flow जो एक है वो LinkedIn optimization के लिए है. So what you can simply do is you can open LinkedIn profile and you can start exploring your LinkedIn profile. कितना आपका LinkedIn profile strong है, ये एक extension के साथ, Chrome extension के साथ आप उस अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं. Let me just quickly demonstrate how it works. Right, it's loading. Okay, और एक टूल है जो है टील, ठीक है, टील फॉर फ्री जॉब सर्च. ये भी एक बहुत जबरदस्त टूल है जो आप यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है. सो लेट मी क्विकली गो बैक टू करियर फ्लो. आई थिंक इट इज अ लिटिल स्लो, maybe because of the network or maybe because of my PC getting slow. I'm not sure what. But anyways, यहाँ पे देखेंगे आप कुछ पॉपअप्स यहाँ पे आ रहे हैं. दिस इज द कैरियर फ्लो पॉपअप. सॉरी, थोड़ा सा स्लो है. Yeah, when I click this, you can see that my LinkedIn profile use LinkedIn banners for to its fullest potential. Bonus tip यहाँ पे देगा आपको क्या क्या कर सकते हैं आप. Then you can go back and you can check your profile photo is check marked, your banner is good, your headline is good, you're open to work, your location is good, your connections, you have good connections, you have a good about section, your experience, there is some lack in your experience. It says 88% आपका प्रोफाइल बेहतर है, उसको और बेहतर बना सकते हैं, is what LinkedIn this tool is suggesting me, right? आप क्या लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस है, फीचर्ड है, LinkedIn URL अच्छा है, स्किल्स है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें हैं, राइट. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस कैरियर फ्लो फ्री वर्जन. आप इसको पेड वर्जन में बिल्कुल जाइए मत, जितना हो सके फ्री वर्जन को यूटिलाइज कीजिए और अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है. और एक टूल है टील, जो कि TEAL, टील. ये सारे इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं. आप मैं इसके लिंक्स डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको इजी हो जाए, राइट. यू कैन इजीली यूज दिस, यू डोंट हैव टू टेक डाउन और नोट इट डाउन फॉर नाउ. आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स. अगेन, टील इज सिमिलर टू कैरियर फ्लो, where you can have the checked for all the things that you have already done. And there is also some job tracker, contact tracker, company tracker, resume builder, ये सारे चीजें भी फीचर्स मौजूद हैं.
but most of those features are available for the paid version, not for the free version. Anyways, जितना हो सके free version को utilize कर लीजिए और अपने profile को optimize कर लीजिए. So this is one thing. Next important thing is the name. आपका एक नेम जो आपका नाम है वो बिल्कुल क्लियर हो, जो आपका ऑफिशियल नेम है वो क्लियर हो, क्योंकि आपके ऑफिशियल नेम से ही आपका रिप्रेजेंटेशन है. देन यू कैन ऐड द हेडलाइन. हेडलाइन शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू योर करियर. अब मेरा हेडलाइन देखिए आप, it was very clear and very easy for Yasin bhai to introduce me by saying that I'm a tech and AI enthusiast, I'm a senior project manager, I'm a certified career coach, I'm a mentor, I'm an EdTech initiatives founder, I'm a volunteer advocate for education and support. These are the things which I represent myself. अच्छा, ये जो मेरा headline है ना, it never stays the same. I always keep it changing. अगर मेरे पिछले पुराने वीडियोस अगर आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखें तो उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे मेरा हेडलाइन, because I grow myself, right? I keep growing myself, I keep improving myself, my priorities keep changing, and that's how my subject or my headline keeps changes, right? This is really important to understand why the headline is important. अच्छा, आप ये headline को आप इतना बेहतर मतलब अच्छी तरीके से कैसे बना सकते हैं, और why this is important? ये important क्यों है? क्योंकि जब रिक्रूटर्स आपके नाम से कोई सर्च करते, people keep reaching out to me all the time. They keep messaging me, they keep asking for various different things. Like for example, this person, she reached out to me, Michael. If you see the message from Michael, he said, I noticed that you are interested in AI from your headline. I'm building connections with the AI field. People get to you by noticing that you are someone who keeps your headline very intriguing, right? जो आपका headline attractive हो, जो आपका easily searchable हो. अब मैं किसी को अगर AI enthusiast नाम से ढूंढूं, अगर मैं AI enthusiast के नाम से ढूंढूं, तो the first thing LinkedIn algorithm checks is for the headline of that person. अगर उसका हेडलाइन में AI enthusiast है तो वो इजीली मिल जाएगा आपको. यहाँ पे देखिए समी, someone named Sami, he is artificial intelligence AI enthusiast. You see this? It is very easy for recruiters to find people with a specific headline. तो इसीलिए important है आपका headline, क्योंकि आप जब आपका प्रोफाइल पे कोई रिक्रूटर आप सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल ऊपर आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको चाहिए कि ये चीज हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. बट देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस स्पेसिफिक पीपल कमिंग इन माय कनेक्शंस. इफ यू नोटिस देयर इज अ थिंग कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? अब मेरे ये बंदा ख्वाजा जियाउद्दीन है, ठीक है, ये डेटा साइंस एंड एआई एंथुसियास्ट है. इनका प्रोफाइल मेरे सामने क्यों आ रहा? बिकॉज ही इज माय सेकंड कनेक्शन. He is my second connection. Some or the other way, his connections, my mutual connections are connected to him. अगर मैं इनका प्रोफाइल ओपन करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, he is an AI enthusiast, and there are few people, there are 13, 14, 15 mutual connections that I have with Ziauddin Saab, right? That's how I get into connection. आप यहाँ पे आप importance of networking देख सकते हैं. अगर आप जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, जितना आपका कनेक्शन बेस स्ट्रांग है, उतना आपका प्रोफाइल विजिबिलिटी रिक्रूटर्स के लिए इजी हो जाएगा. सो हाउ वी विल डू दिस? वी विल गेट टू नो इट व्हेन वी आर इनटू द नेटवर्किंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स. फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द प्रोफाइल. ठीक है? I'm really afraid if I can cover all these areas because there is a lot. मतलब एक समंदर है, इसको एक्सप्लोर करने बैठे हैं आप, इसको यूटिलाइज करें और इसको सही से 360 डिग्रीज अप्रोच में अगर आप करने बैठे ना, इतने सारी चीजें हैं, आप यूटिलाइज करते करते आपका जबरदस्त प्रोफाइल बना सकते हैं और जबरदस्त नेटवर्क बना सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन इजीली गेट अ जॉब इंशाल्लाह इफ यू फॉलो ऑल द टेक्निक्स वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी इफेक्टिवली. अच्छा, बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं लेकिन उसको इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. आई अंडरस्टैंड द कंसर्न, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट जितना हम अपनी तरफ से कोशिश करें उतना बेहतर होगा. सो
दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब आप हेडलाइन को कैसे जबरदस्त इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और हाउ यू कैन मेक योर हेडलाइन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे. कोई एक वॉलंटियर करना चाहेंगे जो जिनका मैं एग्जांपल प्रेजेंट कर सकूं, जो सिंपली एक अपने बारे में बताएं और उनका एक अच्छा सा हेडलाइन बना दें. Shall we do that or it will be time consuming? Let me just come up with some random person. एक random use case ले लेता हूं मैं. Random personality को मैं यहाँ पे define करने की कोशिश करूंगा. Accordingly we can move it further. What I'll do is I will simply say I am back in ChatGPT. I hope you can all see how ChatGPT works now. Okay, I am fine. First, let me assign it a role. Act as an expert content writer and provide me the best suitable content, best suitable title for my LinkedIn headline. Following are my details. ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ ये मेरे डिटेल्स है. यहाँ पे एक कोलन देके मैं बोल रहा हूँ. पहले तो मैं इसको असाइन कर दिया एक रोल. आई आस्क्ड इट टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर. सो आप जब उसको असाइन करेंगे तो इट टेक्स इटसेल्फ एज अ एक्सपर्ट कंटेंट राइटर. देन आई आस्क्ड टू प्रोवाइड मी द बेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर माई लिंक्डइन हेडलाइन. और मैं उसको और डीपली ये भी बोल सकता हूँ कि डू नॉट मेक इट लॉन्ग, just keep it short within 150 words. बस 150 words के अंदर मेरे को आप अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्डइन हेडलाइन बना के दे दो. अब मैं रैंडमली मैं कुछ भी बोलूंगा. आई एम सीनियर रिएक्ट नेटिव developer working on various mobile app projects with expertise in JS frameworks and iOS and Android app development. समथिंग, मतलब मैं कुछ भी जो भी रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहा मैं जब टाइप कर दे रहा हूँ. आप जो चाहे वो अपने बारे में जितने इजी अंदाज में समझाना चाह रहे हो उसको समझा दो. उसके बाद आप बोलो कि एक अच्छा सा लिंक्डइन का एक हेडलाइन प्रोवाइड कर दे. और मैं डिटेल्स ये भी डाल सकता हूँ. आई एम ऑल्सो ए ट्रेनर एंड मेंटर. आई एम ऑल्सो ए ट्रेनर who teaches React Native to students. I also possess some leadership skills. I am interested in AI ML. मैं randomly कुछ अपने बारे में डाल दिया. You see this? It is within few seconds आपको एक जबरदस्त हेडलाइन बना के दे दिया. आप जो चाहे वो ChatGPT को प्रोवाइड कर दो डिटेल्स within or and the key is here is I said within 150 words. Do not make it long, keep it very short and make it as a LinkedIn headline. आप देखो इतना प्यारा हेडलाइन बना के लाके दे दिया आपको. सीनियर रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप एक्सपर्ट, JS फ्रेमवर्क, iOS एंड्रॉइड. बस अब आप ये लेंगे और कॉपी कर लेंगे अपने हेडलाइन पे. as simple as that. Don't you think it is really powerful? बहुत सिंपल है. मतलब आप ChatGPT के साथ इतना जबरदस्त खेल सकते हैं, right? You can make the utilization of the ChatGPT in the best way possible if you know the right prompting techniques. अब मैं आपको मैं एक काम करता हूँ. ये जो example है ना, let me just copy this in the same sheet so that you can utilize this, right? मैं आपको ये यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ. All right, you can use this prompt for making sure your headline. Prompt for headline.
चलो ये जो शीट है ये इंशाल्लाह आप लोगों को सबको मदद करेगी, आप लोग यूज कर लीजिए, इन प्रॉम्प्ट्स को डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन जो है ना, इट डिस्क्राइब्स अबाउट यू, आप कौन है, आप क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। इतना जबरदस्त आप अपने आपके बारे में लिख सकते हैं कि यू कैन प्रोवाइड एवरीथिंग अबाउट यू, यू कैन प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स अबाउट यू। ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करना और ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को प्रेजेंट करना अपने प्रोफाइल में हर जगह, ये जो है सर्च इन, आई होप सम ऑफ यू ऑलरेडी नो द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ कैसे वर्क करता है, कीवर्ड्स के पावर से, राइट। द पावर ऑफ कीवर्ड्स, ऑलरेडी एसईओ इंजीनियर्स, एसईओ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स माइट नो द पावर ऑफ एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे काम करता है, सिमिलरली द कीवर्ड्स विच वी प्रेजेंट फॉर द लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाता जब आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करते। नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल हाउ टू यूज effective use this ChatGPT prompt to extract the best keywords for your CV और LinkedIn profile। देखिए keywords बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। अगर मैं सबसे की और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर बोलूं तो वो है कीवर्ड्स। आप अपने कोई भी प्रोफेशन में हो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप इतने जबरदस्त कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। First, let me show you the prompt, or before showing you the prompt, okay, let me show you the prompt first. ये prompt है, act as an expert keyword extractor for CV. I am sharing the job description. ये bracket में मैं job descriptions दे दिया ताकि मैं यहाँ पे एक 10, 15, 20, 25 जो भी job description है मैं यहाँ पे ऐड कर सकूं। उसके बाद from various job postings online, I am sharing around number of postings। अब मैं यहाँ पे 10 अगर जॉब पोस्टिंग शेयर करा तो मैं 10 दे दूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 बोलूंगा तो यहाँ पे मैं 50 जॉब पोस्टिंग कॉपी पेस्ट करूंगा। फिर डिफरेंट जॉब पोस्टिंग फॉर द जॉब रोल, मेरा जो भी जॉब रोल है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग रिएक्ट नेटिव डेवलपर, ठीक है, मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ, इतने नंबर ऑफ जॉब पोस्टिंग्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये मेरे डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, राइट। क्लियर, वेरी क्लियर, राइट। Now I'm double down, I'm saying it extract the top keywords। अब देखिए मैं पहले भी ये बोला कि act as an expert keyword extractor, फिर से मैं बोला extract the top keywords। So when I'm repeating or when I'm double down the prompt, it takes it more seriously। आपका prompt जो है, देखिए मैं यहाँ पे कोशिश ये भी कर रहा हूं कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में समझा दूं कि कैसे प्रॉम्प्ट वर्क करता है। दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक इज कॉल्ड डबल डाउनिंग, राइट। की एक्सपर्ट कीवर्ड्स, मैं फिर से रिपीट करा, एक्सपर्ट एक्सट्रैक्ट द कीवर्ड्स एंड हेल्प मी बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट कीवर्ड एग्रीगेटर सो दैट आई कैन यूज इट फॉर माई लिंक्डइन एंड सीवी प्रोफाइल, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है मेरा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। आई विल यूज दिस बाय कॉपी पेस्टिंग इट। अब मैं यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर लिया विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड हियर। एक्ट एज एन, ये सारा प्रॉम्प्ट जो अभी हम लोग देखें। जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से लाया मैं? You must be thinking where I got these job descriptions. I pasted around 10 job descriptions here, अलग अलग जगह से। अब फॉर एग्जाम्पल सिंपली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो बैक टू माई प्रोफाइल, गो बैक टू लिंक्डइन और मैं ये बोलूंगा रिएक्ट नेटिव डेवलपर। सिंपली मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर यहाँ पे टाइप करा, तमाम yeah, now you can see that I want to see jobs. I can see post, people, groups, but I'm specifically interested in seeing the jobs now. Why I'm seeing the jobs? Because I want to extract the job description from these jobs. Let me just quickly go ahead and click this. All right, now what I based on the location that I am in, मैं क्योंकि रियाद सऊदी अरेबिया में हूँ अभी, तो
रेलेवेंट लोकेशन, वो मेरा लोकेशन सिस्टम से डिटेक्ट करके आपको रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लोकेशन के हिसाब से वो दे देगा. So now I'm getting some job descriptions. I'm really sorry, my internet seems to be down today. I don't know why. It's so slow. Okay. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ job descriptions है, right? What I'll do is simply I will copy paste this. मैं कुछ पढ़ना नहीं चाह रहा इसको, मेरे को कुछ इतना टाइम पढ़ना तो बहुत बेहतर है अगर पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं ये कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का जब मैं ये चैट जीपीटी में जब मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा था, तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बल्कि जब दिया था ना, उसके नीचे मैं ये स्टार्ट कर दूंगा पेस्ट करना. अब जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं एक एक कॉपी, एक एक मैं जॉब लूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन लूंगा, पेस्ट कर दूंगा. अगेन आई विल गो टू सम अदर जॉब, ऐप कनेक्ट डेवलपर, मैं फिर यहाँ पे जाऊंगा और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन. इस तरह के 10 to 50 जॉब आप कलेक्ट कीजिए. जितने ज्यादा कलेक्ट करेंगे उतना बेहतर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कीवर्ड्स. समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एक 10, 15, 20 जॉब लिस्टेड जॉब्स है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है. वो सारे जॉब डिस्क्रिप्शन के बीच में से आप क्या कर रहे हैं, टॉप मोस्ट कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं. हाउ यू आर डूइंग दैट, दिस इज हाउ एक्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू दैट. ये आपका प्रॉम्प्ट है जहां पे आप जॉब रोल प्रोवाइड कर रहे हैं. जॉब रोल अगर देखेंगे आप, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिया, सो यू कैन जस्ट चेंज. आपको सेम प्रॉम्प्ट यूज करना है, सिर्फ आपको अपना जॉब रोल चेंज करना है. नंबर ऑफ पोस्टिंग्स, अब मैं यहाँ पे 10 जॉब डिस्क्रिप्शन लिया तो 10 डालूंगा. अगर 50 जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला, अगर मेरे को उतनी फुर्सत है या मैं उतना सब्र है मेरे पास, तो मैं 50 जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल के पेस्ट कर सकता हूँ. फिर जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल के ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन डालना है. अब देखिए, मैं जब ये जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग 10 निकाला, आई थिंक मैं 10 नहीं निकाला, एक 5 निकाला बस, उसके बेसिस पे this is exactly what I got the response from the ChatGPT. Based on the provided job description for the role React Native developer, I have extracted the top keywords that can help you build a strong keyword aggregator for your CV and LinkedIn profile. These keywords reflect the skills, qualifications, responsibilities associated with the role. Make sure to incorporate these keywords naturally into your CV and profile to showcase your expertise effectively. अब ये इतने सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस, वो मेरे जो इतना बड़ा पोस्ट है ना, मैं जो कॉपी पेस्ट करा, उसके बेसिस पे मेरे को ये अच्छे अच्छे जॉब डिस्क्रिप्शंस निकाल के दे दिया. But what I said is extract the top 10 keywords which is mandatory to have in my profile. मैं क्या बोला, ठीक है ये तो सारे अच्छे हैं, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन आप निकाल के दे दिए, बट एक्सट्रैक्ट द टॉप 10 कीवर्ड्स जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है या जो सबसे ज्यादा इन जॉब डिस्क्रिप्शंस में फ्रीक्वेंटली पीपल आर आस्किंग फॉर. आई आस्क्ड टू हैव दोस 10 जॉब डिस्क्रिप्शंस. नाउ यू सी दिस, इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कैसा होता, आप एक प्रॉम्प्ट दे देते, कुछ रेस्पॉन्स आता, फिर based on that you are more digging down or you are more narrowing down your options and you are getting this. तो उसके बाद आपको एक अच्छे जबरदस्त 10 जॉब डिस्क्रिप्शंस आ गए. ये जॉब डिस्क्रिप्शंस जो होंगे ये आपके प्रोफाइल में हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए. समझ रहे हैं आप, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको चाहिए कि आपके हर जगह रिफ्लेक्ट होना. हर जगह मतलब it should be in your headline, it should be in your activities, in your about section. यहाँ पे about section में बार बार रिपीट करना बेहतर होगा. यहाँ पे आपको हर एक्सपीरियंस के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुछ अच्छा डिटेल में डालने का, वो आप यूटिलाइज कर सकते. There are a lot of places where you can put all your आपके सारे डिटेल्स जो है कीवर्ड्स के, ये आप वो कीवर्ड्स को हर जगह आप यूज कर सकते. यू कैन ऑल्सो एड दो स्किल्स यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को यू कैन कीप एडिंग योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स दैट यू आर गेटिंग. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. कुछ कंफ्यूजन है या कुछ
बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है, या इज इट ऑल क्लियर, या सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ रिस्पॉन्सेस अगर चैट बॉक्स में अगर देंगे, ऑल इज गुड, क्लियर, फास्ट है, अच्छा, ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल स्लो, फाइन, alhamdulillah, very lucid, all clear, very clear. चलिए, great, thank you so much for all your responses. Yes, need to explore later, यही तो है। अब आप यहाँ पे सीख लेंगे और इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। ये इंशाल्लाह अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनिए, और या नहीं तो अपनी तरफ से खुद से एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह उसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज दिस विल नॉट हेल्प। आपको चाहिए कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें अपने प्रोफाइल पे, ये मेहनत करें आप, जाके आप अपने प्रोफाइल के कीवर्ड्स निकालना, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। देखिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, after getting all these things, let me go back to my profile again, जहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। अबाउट सेक्शन को आप अच्छे तरह से उसको जबरदस्त रिफाइन कर सकते हैं। You can use it very nicely. You can present it about yourself as much as possible, right? And you need to put all your experience in your experience section. यहाँ पे अब मेरा अगर मैं पहले से मेरा एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप, तो you can see all my 8 experiences, starting from my junior developer position to web developer to senior position, फिर उसके बाद टीम लीड, अलग अलग मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, जैसे मैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर from in Hyderabad, from May 2011 to December 2007, and what are the things I did there. Then I added my web software developer at Ministry of National Guard Health Affairs, then senior software engineer at Saudi Systems, then development team lead at Ministry of Social Affairs, Ministry of Resources, Human Resources and Social Affairs, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टीम लीड, फिर उसके बाद मेरा प्रेजेंट जो रोल है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। बीच में रिसेंटली मैं स्टार्ट करा, अप्रैल में मेरा कंपनी फाउंड हुआ, और मई में मैं educationis.ai का प्रोजेक्ट का सोचा, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑल्दो when I become a full-time dedicated CEO for this company, inshallah this will move up, but presently क्योंकि मेरा कंपनी अभी फिलहाल सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एट UXBert Labs है, तो मैं वो ऊपर रहूंगा अभी फिलहाल। बट व्हेन आई गेट फुल फ्लेज्ड इनटू दिस, फिर उसके बाद मेरा प्रायोरिटी चेंज होगी। तो बोलने का मतलब यह है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने रोल्स को बार बार ऑप्टिमाइज करते रहना और कंटिन्यूअसली इसको अपडेटेड रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई आपको रिक्रूटर आएगा, आपके प्रोफाइल सर्च करते करते आपके प्रोफाइल पे लैंड करेगा, तो उसको एक एहसास ये होना चाहिए कि दिस इज द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। ये कैसे हो सकता है? जब आपके पहले तो कीवर्ड स्ट्रांग हो, ताकि सर्च रिजल्ट में आप कंटिन्यूअसली सामने आते रहे। यू हैव टू बी वेरी clear about all your previous experiences, and you can utilize these areas on presenting how the best way possible. ये सारी चीजें आपको करना होगा, बहुत important है। Please note this down as much as possible and make sure you're making all the efforts to make your profile the best way possible. Now let me go back and एक घंटा हो गया already, mashallah. So we still have just 45 minutes, क्योंकि last 15 minutes हम Q&A के लिए रख लेंगे। तो within this 45 minutes, I will try to cover as much as possible for various other areas. Fine. अभी एक important चीज है, आप लोग शायद नोटिस कर रहे होंगे मेरे प्रोफाइल पे, it says talks about some different areas. I talk about AI, I talk about leadership, management, career growth mindset and all these things. This is what I talk about. ये शायद आपके प्रोफाइल में ये नहीं होगा। You can see this because my profile has a creator mode on. अब आपके पास ये अगर ऑफ है, तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पहले तो ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही ऑन करेंगे, you will get an option to add up to 5 topics that you frequently talk about. आप
जिसके बारे में फ्रीक्वेंटली बात करेंगे, एआई है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है। अब आपके हिसाब से, आप अगर डेवलपर है तो आप उस स्पेसिफिक आपके टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख सकते हैं। Whatever the things you talk about, just add that and your creator mode will be on. जैसे ही आपका creator mode on होगा, you get these options visible on your profile. ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये हम उसको कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, ये हम देखते हैं, राइट। लेट मी क्विकली गो बैक टू माय प्रोफाइल। अब देखिए, when I say when I talk about these areas, right, I create some content about it. अगर यहाँ पे देखें आप, मेरे ग्रोथ, करियर ग्रोथ है या ग्रोथ माइंडसेट है, ये चीजें मैं अक्सर बात करता हूँ। तो करियर ट्रांजिशन के बारे में मैं एक पोस्ट लिखा था, जिसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा उसका वो आया, रिव्यू आया। क्योंकि मैं जो कंटेंट क्रिएट करा, that content was relating with many people and that content is natural. That is not some copy paste content, इधर से उधर से random copy paste content नहीं था। इस वजह से लोग उसको सराहे और उसको appreciate करें। Just because when you write some content and when you use this power of LinkedIn, content writing का अगर मैं एक सेशन पूरा डेडिकेट कर दूं तभी बस नहीं होगा। कंटेंट राइटिंग इज किंग फॉर लिंक्डइन। आप सोच रहे होंगे मेरे जॉब से कंटेंट राइटिंग का क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना है। आई विल शो यू, आई विल से वेरी क्लियरली क्यों इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग। मैं चलिए रैंडमली मेरे प्रोफाइल पे मैं विजिट करता हूँ, ठीक है। कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ इज नॉट, अगर आप कंटेंट राइटिंग को ही अगर आप इंपॉर्टेंट समझ रहे तो दैट इटसेल्फ इज नॉट एवरीथिंग। यू कैन ऑल्सो कीप engaging with different content. अगर आप यहाँ पे देखें तो आमिर सैयद liked a comment, liked a post by आसिम कुरैशी। आसिम कुरैशी जो CEO जिबल के हैं, उनका कमेंट आमिर सैयद ने लाइक किया। That is the reason it is showing on in my feed। मेरे फीड में इनका ये आया। देखिए मैं यहाँ पे LinkedIn एल्गोरिथम कैसे वर्क करता वो बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ सकें कि अगर आपका कोई बंदा, कोई नेटवर्क में ऐसा पावरफुल बंदा है जो आपके नेटवर्क में ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनके सामने आप अगर हमेशा अपना फोकस बनाना चाह रहे या अपना कुछ देना चाह रहे, कि विजिबिलिटी देना चाह रहे, तो जितना आप सामने आते रहेंगे, जितना आपकी विजिबिलिटी बनते रहेगी, अगर उनके पास से फॉर एग्जांपल यू कनेक्टेड विद सम HR और रिक्रूटर और अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर एग्जांपल, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट अगर आया, तो आप अगर रेगुलर बंदे हैं जो कंटेंट को लाइक करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं या रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे एक्टिव चीज़ों पे आप हमेशा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका कंटेंट विजिबल होता रहेगा लोगों के सामने, वो रिक्रूटर्स के सामने। तो मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर 3-4 मंथ्स के बाद आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया, 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गया और आपको मैं रेगुलर देखते रहता हूँ। अब मैं आमिर सैयद को अब हमेशा रेगुलर देखते रहता हूँ क्योंकि वो बंदा बहुत एक्टिव रहता, राइट। सो आई रेगुलर सी दिस पर्सन दैट ही लाइक्स सम, ही कीप्स एंगेजिंग हिमसेल्फ। तो मेरा एकदम क्लिक यही होता कि दैट इज द पर्सन हु इज इन माय नेटवर्क हु कैन बी ए बेस्ट फिट फॉर दिस पोजीशन, राइट। समझे आप यू जस्ट एनालाइज हाउ इट वर्क्स। आप हमेशा अपने आप को फीड्स में अगर बनाए रखें और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें या अच्छे कंटेंट को लाइक शेयर करते रहें और कमेंट्स अच्छे करते रहें, तो आपका जो विजिबिलिटी है लिंक्डइन एल्गोरिथम आपके सारे नेटवर्क्स के सामने प्रेजेंट कर देगा, राइट। व्हेन यू हैव सी एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड हियर। नेटवर्किंग पहले होना, नेटवर्किंग के बाद सही कंटेंट आना, कंटेंट को फिर सर्चिंग टेक्निक से आपका प्रोफाइल अगर ऑप्टिमाइज्ड है तो वो सर्चिंग टेक्निक से जो भी बंदा आपका जो रिक्रूटर है वो बंदा अगर आपका प्रोफाइल विजिट करा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया कि मैं एक सीधा साधा एक डेवलपर को हायर करूं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ एज ए रिक्रूटर, आजकल रिक्रूटर्स को बहुत ज्यादा ईजी हो रहा है लिंक्डइन पे सर्च करना।
यकीन मानिए बहुत इजी हो जा रहा है रिक्रूटर्स को लिंक्डइन पे सर्च करना, क्योंकि आपको ज्यादा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एचआर को, आपके रिक्रूटर को जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, फिर उसका जॉब पोस्टिंग होना, अप्रूवल होना, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालना। मैं वो सब नहीं करता। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे को इमीडिएटली कोई बंदा चाहिए, मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ रिएक्ट नेटिव डेवलपर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर बोल के मैं टाइप करता हूँ, और उसके बाद मेरे सामने कुछ डेवलपर्स के प्रोफाइल्स आ जाते। मैं उसके बाद पीपल पे क्लिक करता हूँ, और फिर मेरे सामने इफ आई क्लिक ऑन पीपल एज अ रिक्रूटर, क्योंकि मेरे को अब बंदे की जरूरत है, राइट? सो व्हाट आई डू इज आई विल जस्ट मेक श्योर दैट द लोकेशन इज रियाद। मेरे को सिर्फ बंदे जो रियाद में मौजूद हैं वो चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि मेरा टारगेट रियाद है। अगर आप देखेंगे विदाउट दिस फिल्टर आई गॉट, अच्छा लेट मी शो यू अगेन, मैं अभी फिल्टर निकाल दिया, ठीक है? विदाउट दिस फिल्टर 195,000 रिजल्ट्स मेरे पास आए, 195,000, मगर मेरा स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट है, राइट? तो मैं उसको नैरो डाउन करके उसको बोलता हूँ रियाद। 195,000 से अब कितने हो जा रहे देखिए आप रिजल्ट्स, सिर्फ 463 रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए। यू सी दिस, 463 रिजल्ट्स मेरे सामने रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स के आगे जो कि रियाद में मौजूद है। अभी फिलहाल 463 पीपल आर देयर इन रियाद विथ रिएक्ट नेटिव डेवलपर। अगर मैं और उसको नैरो डाउन करूं तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे फर्स्ट कनेक्शन में या सेकंड कनेक्शन में कौन कौन है, तो मैं उसको और नैरो डाउन करके मैं ये देख सकता हूँ कि 380 और नैरो डाउन हो गया। अच्छा, लेट मी मेक इट ओनली फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है? मेरे फर्स्ट कनेक्शंस कौन कौन है मैं चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ 6 रिजल्ट्स मेरे सामने आए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी, हु आर बेस्ड इन रियाद एंड हु आर रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स। मैं उनके साथ मैं देख सकता हूँ उनको, एंड आई कैन इजीली कनेक्ट विद देम। दैट्स हाउ आई कैन डू इट। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज, जो मैं आपको अभी बता रहा था, कंटेंट क्रिएटर, रिएक्ट नेटिव के बारे में ये बंदा बहुत लिखते रहता और मेरे सामने ऑलरेडी आते रहते, तो ही कैन बी ए ग्रेट पर्सनालिटी, ही मस्ट बी ए गुड डेवलपर। तो पहली चीज मैं ये करता हूँ कि वो बंदे को जाके मैसेज करता हूँ, हेलो आमिर, आई एम लुकिंग फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपर, आर यू अवेलेबल फॉर दिस जॉब पोस्टिंग? बस मैं मैसेज कर देता हूँ, बंदे को सीवी भेजो बोलता हूँ, चेक कर लेता हूँ, खलास। It's very easy for me as a recruiter. See, I'm thinking always from the perspective of a recruiter, not from the perspective of a job seeker. आप रिक्रूटर कैसा रिक्रूट करता वो समझ गए तो आपको जॉब सीकिंग इजी हो जाता, तो आपका अपने प्रोफाइल को वैसा बनाना इजी हो जाता। You can connect the dots, right? You can all connect the dots what I'm trying to say here. I hope it's all clear for most of you. अगर ये क्लैरिटी नहीं है या अगर आप चाह रहे कि और क्लैरिटी हो तो देन यू कैन एनी टाइम स्टॉप मी एंड यू कैन इंशाल्लाह आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशंस। फाइन, तो आप इंपॉर्टेंस समझ गए ना। अभी कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, अब देखिए आप बोलेंगे मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं है, मेरे पास कंटेंट के उतने कुछ आइडियाज नहीं है। डजंट मैटर, ऑल यू नीड टू डू इज, आप कुछ आज काम कर रहे, ठीक है? एज ए बिजनेस, आप एक बिजनेस एनालिस्ट है, आप कुछ स्वॉट एनालिसिस पे काम कर रहे और आपको कुछ अच्छे आइडियाज आ गए, आप ये चाह रहे कि वो चीज या कुछ एक अच्छा आर्टिकल पढ़ लिए, ठीक है? वो आर्टिकल पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि आई वांट टू राइट अ कंटेंट फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक, आई वांट टू मेक श्योर, आप मतलब इतना नेचुरल बना सकते हो उसको ताकि आप डायरेक्टली उस चीज को रिलेट कर सके, राइट? उस चीज को आप जितना ज्यादा रिलेट कर सकेंगे और जितना ज्यादा आप नेचुरल बना सकेंगे अपने कंटेंट को, उतना बेहतर होगा। जितना ज्यादा जो बंदे जितना ज्यादा लिंक्डइन पे पोस्ट करते ना, उनका रेट ऑलरेडी कुछ डेटा निकला था। लिंक्डइन का जो डेटा होता है यूजुअली, जो सर्वे रिजल्ट्स होते हैं या वो होते हैं, जो बंदे ज्यादा पोस्ट करते या ज्यादा एक्टिव रहते, वैसे बंदों का probability of getting the job is higher.
because they keep themselves their visibility always in front of people. ये इंपॉर्टेंस है कंटेंट क्रिएशन का. प्लीज 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 जितना हो सके अपने कंटेंट राइटिंग को बेहतर बनाइए और कोशिश कीजिए कि अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें. आज नहीं तो कल या 1 साल के बाद सही आपको एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह कि आप सोच भी नहीं सकते. मतलब आप आज सोचेंगे मैं 1 महीना आप कंटिन्यूअसली पोस्ट करके सोचेंगे अरे कुछ भी नहीं हो रहा, खाली कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो फायदा ऐसा जाहिरी तौर पे नजर नहीं आता. वो फायदा जो है आपको किसी ना किसी तरीके से एक स्ट्रक्चर में बन के सामने आता है. आज नहीं तो कल 1 साल के बाद से ही डेफिनेटली फायदा होता, नहीं होने का सवाल नहीं है. मैं इसीलिए इंपॉर्टेंस इसका बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं करते. देखिए 900 मिलियन पीपल है, लेकिन जॉब सिर्फ देखो एक रिपोर्ट के हिसाब से 250 जॉब जो अप्लाई करते उसमें से सिर्फ 6 बंदों को इंटरव्यू तक जाने का मौका मिलता. क्यों? सिर्फ 6 बंदों को. आउट ऑफ 250 ओनली 6 पीपल गो टू इंटरव्यूज. मतलब उसमें से वो 250 में से आप भी कोई होंगे जो कई जॉब्स को अप्लाई करे और फेल्यूर का सामना करना पड़ा, राइट? दैट डजंट वर्क. जॉब मार्केट इज टोटली डिफरेंट. आपका सीवी देखो, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे कंपनी को, आपका क्या अप्रोच है, आप कैसे नेटवर्क बिल्ड कर रहे, आप कैसे लोगों के सामने आ रहे, आपका यूनिकनेस क्या है. एक जॉब पोस्टिंग पे हजारों के जॉब एप्लीकेशंस होते हैं, तो आप इमेजिन करिए आपका सीवी कोई देखने के लिए क्यों आएगा. अगर आपका सीवी बिल्कुल नॉर्मल है जिसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आपका सीवी मेरे ख्याल से शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा, वो नजर में भी नहीं आएगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल करें. फॉर दैट यू मेक श्योर यू आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न. हर चीज अपना लीजिए. 360 डिग्रीज अप्रोच हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. देखिए जितनी हम अपना पूरा एफर्ट लगा दें, बाकी अल्लाह के ऊपर है. अल्टीमेटली अल्लाह विल गिव. if you deserve any job, then Allah will definitely give. अगर आप ये सोचेंगे अल्लाह मेरी मदद करेगा और कोई मेहनत नहीं करेंगे, that doesn't work this way. You have to put all your efforts, then trust on Allah. Only then inshallah you will get the best results, best output possible. This is really important. तो हम अपना देखिए ये जो अप्रोच है ना, ये पूरा 360 डिग्री इस अप्रोच है. आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप सारे सर्चिंग टेक्निक्स यूटिलाइज कर ले रहे हैं, आप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं. अच्छा, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बिल्ड करना, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट एग्जैक्टली हाउ यू कैन फाइंड हु आर द बेस्ट पीपल हु यू कैन कनेक्ट. let me give you a quick example here, right? You can see the screen, right? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब पोजीशन क्या है. अब क्योंकि मैं रिएक्ट नेटिव बार बार बोल रहा हूँ तो रिएक्ट नेटिव लिख देता हूँ. रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, ठीक है. अब रिएक्ट नेटिव डेवलपर को आप सेंटर में रखिए अपने आप को. आपका कोई भी पोजीशन हो, अब लाइटिंग इंजीनियर है यासीन साहब, लाइटिंग इंजीनियर को कौन कौन हायर कर सकते, हु आर द पीपल हु कैन हायर, दोज आर द सर्कल्स दैट यू नीड टू मेक. अब यहाँ पे मैं कुछ रिएक्ट नेटिव डेवलपर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डाल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूजुअली लुक फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स. मोबाइल लीड्स होते, HR रिक्रूटर्स होते हैं जो यूजुअली बंदों को ढूंढते रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को. आपको कौन कौन हायर कर सकता, अल्टीमेटली ये जो है ना, ये जो आप सर्कल बना रहे ना, आप ये बना रहे कि कौन कौन आपको हायर कर सकता, तो आप ये लिंक कर ले रहे सब, ठीक है. आप डायरेक्टली ये लिंक कर ले रहे कि ये सब बंदे हैं जो मेरे को जॉब दिलाने में मदद कर सकते. पहले आप ये लिस्ट बना लीजिए, एक ऐसा अपना क्विकली एक सर्कल ऑफ बिल्ड द सर्कल ऑफ नेटवर्क. पहले सर्कल ऑफ नेटवर्क बना लीजिए, कौन कौन है जो आपको हायर कर सकते. अगर एक कोई CEO है या फाउंडर है, स्टार्टअप का फाउंडर है और उसको एक रिएक्ट नेटिव की डेवलपर की जरूरत है, तो वो भी रिएक्ट नेटिव डेवलपर को ढूंढ सकता है, राइट. तो ये है ऐसा, इस तरह का एक सर्कल ऑफ नेटवर्क बना लीजिए. अब आप क्या कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको ये रोल चाहिए, आप जाते searching technique. Now I am displaying you the searching technique. Now I am displaying you the searching technique, right? What I'm doing is there are many different searching techniques. Boolean search है और advanced search है, अलग-अलग searching techniques है. अब मैं project manager चाहिए मेरे को, right? What I'm doing is I am going to use the Boolean search, project manager or mobile team lead and रियाद, कोई रियाद का प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड वो बंदा कोई आईटी का हो, राइट? ये अगर आप देखेंगे ये एक बुलियन सर्च टेक्निक है. मैं आपको बताता हूँ कैसा वर्क कर रहा है. मैं क्या करा, एंड और अगर आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आप लोगों को बुलियन एंड और के बारे में मालूम होगा, राइट? एंड और कैसा वर्क करता, ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन यूज द एंड और टेक्निक इन दी सर्चिंग. प्रोजेक्ट मैनेजर और मोबाइल लीड, ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने. यानी मेरे को कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या मोबाइल लीड का प्रोफाइल निकालो जो रियाद में हो एंड जो आईटी फील्ड में. यू सी दिस, व्हेन आई एम नैरोइंग डाउन विद माय बूलियन सर्च, मेरे पास कुछ कनेक्शंस आ गए सामने. ये जो कनेक्शंस है ना, ये कनेक्शंस मेरे लिए गोल्ड माइन है. नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बहुत हम कॉमनली सुनते हैं, राइट? नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो आपका नेटवर्थ बनता अगर आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करते. अब शाहिद मुनव्वर साहब सीनियर प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर है, राइट? और वो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी उनको रिएक्ट नेटिव डेवलपर की जरूरत पड़ सके, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ऐसा डेवलपर की जरूरत पड़ सकती, राइट? तो आप उनको क्या करना, सीधा जाना, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना, एक शॉर्ट नोट ऐड करना, बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि आपको ज्यादा यहाँ पे लिमिट सिर्फ 300 कैरेक्टर्स का होता. इफ यू वांट टू use the ChatGPT for sending a correction request, what I can do is act as an expert content writer and provide me the best connection request message for a potential connection whose position is delivery manager. Make sure the content is less than 300 words and it should be effective enough so that he can accept my connection request. अब देखेंगे क्या बोलता है. यहाँ पे मैं बोला, आप देख रहे हैं ना, अब देखो कभी कभी ChatGPT 300 वर्ड्स बोला तो नहीं समझा, अब इतना लंबा दे दिया. अब मैं उसको क्या करना, यू ऑलवेज हैव टू करेक्ट ChatGPT. नो, आई सेड आई नीड ओनली 300 कैरेक्टर्स. My apologies, वो apologies कर लेता for misunderstanding. Here is the concise connection request message under 300 characters. Hello, impressed by your role as a delivery manager. Let's connect and discuss logistics excellence. खैर, अगर आप उसको more content और कॉन्टेक्स्ट अगर प्रोवाइड करें कि आप क्या है और क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर इसको यहाँ पे जितना बेहतर आप अपना प्रॉम्प्ट बना सके उतना बेहतर आप अपने को कनेक्शन रिक्वेस्ट बन सकता. तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जाना और उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट में ये कॉपी पेस्ट कर देना. ठीक है, सिंपली यू कैन से दैट इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल या जो भी बोलना है बोल के आप
सिंपली ये कर सकते और कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दे सकते। जैसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करे, आप देखना कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। समटाइम्स यू माइट गेट एडेड टू द कनेक्शन, समटाइम्स यू फेल। आप इमीडिएटली क्या जाके ये नहीं बोलना कि मैं जॉब देख रहा हूँ सर, मेरे को जॉब दे दो। कोई भी नहीं देता आपको जॉब, कोई नहीं देता आपको जॉब। मैं जॉब देख रहा हूँ सर, आप जॉब दे दो बोले तो कोई भी नहीं देते। आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोफेशनल बनो। जितना आप प्रोफेशनल बने उतना ज्यादा आपके चांसेस बिल्ड होते हैं, राइट। आप जितना प्रोफेशनल बने, देखो मेरे को एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है, आपका प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग दिखा, आप दैट इज द रीजन आई वांट टू कनेक्ट। बस आप फर्स्ट पुश में कभी भी जॉब होना, मेरे को ऐसा होना वैसा होना मत बोलिए। आप जैसा उनका कनेक्शन बिल्ड हो जाता, पहले उनको कनेक्शन में अंदर ले तो लो, बाद में मौका मिला अगर उनका कोई जॉब पोस्टिंग है, कल के दिन अगर शाहिद मुनव्वर साहब पर ये जॉब पोस्टिंग डाले, आई एम लुकिंग फॉर ए रिएक्ट नेटिव डेवलपर इन रियाद, आप इमीडिएटली, क्योंकि उनके कनेक्शन में है, आपके सामने वो पोस्ट आ जाता। आप उनसे डायरेक्टली जाके बोल सकते आप मेरे कनेक्शन में ऑलरेडी है सर, ऐसा मेरा ये प्रोफाइल है, आपके पास ओपनिंग है बल्कि सुना में, ये प्रोफाइल है, प्लीज गो अहेड एंड सी माय प्रोफाइल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देखो बंदों की मेंटालिटी को समझना। कोई भी आके अगर मेरे को ये मैसेज करा कि सर आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, प्लीज एक्सेप्ट माय कनेक्शन, मैंने कर दूं, मैं क्या करूं? अभी मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मेरे पास कोई ओपनिंग है नहीं, तो मैं कैसा, दुनिया के मैसेजेस आते हैं ऐसा। व्हाई शुड आई इवन कंसिडर दैट रिक्वेस्ट? आप एक बंदे के, आप अपने आप को उस बंदे के उसमें रख के सोचिए। व्हाई शुड एनीवन एंटरटेन यू when you are just directly asking for something that is not mutually benefit? कोई भी देखिए, हर कोई बंदा आजकल म्यूचुअल बेनिफिट के लिए देखता। अब मैं किसी को अगर अप्रोच करूं तो आई विल से व्हाट आई कैन गिव यू, राइट। आई विल फर्स्ट से what benefit I can add you, or just adding a good connection like you will be a great for my network, वो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, बट डायरेक्टली ये मत बोलिए कि मेरे को जॉब होना। क्लियर है, राइट? सो मेक श्योर यू बिल्ड कनेक्शंस दिस वे। सो पहले आपको करना क्या है, आपको अपना सर्कल ऑफ नेटवर्क बनाना है, और उन नेटवर्क्स को जाके या तो बुलियन सर्च के साथ या एडवांस सर्च के साथ आप नैरो डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनीज के बेसिस पे भी नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप कंपनीज को देखना चाह रहे, तो then you can go ahead and narrow down with that company lists as well. तो यहाँ पे आप देखिए जॉब पोस्ट देख सकते हैं आप उन स्पेसिफिक जॉब उसके साथ एडवांस। अब मैं पीपल में जा रहा हूँ, लेट मी अगेन गेट सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर यू। थाउजेंड रिजल्ट्स है मेरे पास विद दिस क्राइटेरिया। जो मेरा क्राइटेरिया है यहाँ पे, ये मेरे कमांड के साथ मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है। मैं इन 1000 लोगों को अपना नेटवर्क बना सकता हूँ, बट आई शुड नॉट डू दैट, क्योंकि मेरा एक टारगेट लोकेशन है। मेरा एक टारगेट लोकेशन क्या है, रियाद का है पहले तो, ठीक है। वो टारगेट लोकेशन मैं सेलेक्ट कर दूँ, उसमें से मेरे को कुछ कम होके 735 बता रहे। अब मैं और क्या करता हूँ, एक्टिवली हैविंग प्रीमियम ऑल फिल्टर्स में मैं जाके यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक है जो लीडरशिप के बारे में बात करता हूँ, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, या कोई एक ऐसा टॉक्स अबाउट, इफ यू रिमेम्बर टॉक्स अबाउट, मैं पहले बताया जब आप कंटेंट क्रिएटर है तो टॉक्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली ये जो है, आप वैसे बंदों को, अब आप अपने नेटवर्क में और रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को, अपने सिमिलर काइंड ऑफ बंदों को ऐड करना चाह रहे हैं, राइट, यू कैन डू दैट। आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो। अब मैं एक डेवलपर हूँ और हमारी कंपनी में कंपनी बोली कि डेवलपर्स को एक्सपैंड करना है और डेवलपर्स को ढूंढना है, जरा क्विकली अपने नेटवर्क में ढूंढो, कोई है तो बोलो, हायर कर लेंगे। आप सोचो, आप ऑलरेडी एक कई सारे रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स, आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर है और कई सारे रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को आप अपने कनेक्शन में ऐड कर लिए, और उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या करते, अपने नेटवर्क में ढूंढते, राइट। So that's how you need to make sure you are into the network of people who are already looking for job, people. देखिए जॉब सर्च एक ऐसी चीज है ना, without having a good reference or without having good connections,
98% of the jobs fulfill through internal connections itself. Referrals से, internal connections से, majority of jobs get fulfilled. वहीं पे क्लोज हो जाते, बाहर तक जॉब ओपनिंग आती भी नहीं कई कंपनीज की. इसीलिए नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क होना, अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना और ये सारी चीजें होना. तो यहाँ पे अपन सर्चिंग टेक्निक भी देख लिए और नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस देख लिया और कैसे हम नेटवर्किंग को वो कर सकते हैं वो भी देख लिए. अगर आपके कोई स्पेसिफिक कंपनी टारगेट है, मेरे को अगर विप्रो में ही जॉब चाहिए या विप्रो टीसीएस जैसे अलग अलग जॉब्स चाहिए, तो मैं कंपनी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड करके मैं वो फिल्टर कर ले सकता हूँ. या पास्ट कंपनीज या स्कूल है या कोई इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, मेरे को आईटी सर्विसेज के बंदे चाहिए, मेरे को सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और आईटी के बंदे होना, मेरे को सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ही होना और सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी देख सकता हूँ. मैं ये सारे फिल्टर आउट करके मैं अगर देखा तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो एक अलग मुख्तलिफ रिजल्ट आता. 145 से 97 रिजल्ट्स आ गए. अब these are the connections which are more appropriate to get connected with. Mohammed Nasir is someone who can be a good connection for me because कल के दिन उनके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट आया तो मैं उनके कनेक्शन में रहता हूँ. ये आपका पर्सपेक्टिव होना, समझे आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर all these techniques are applied very well. There is a lot, if I keep going on and on and on, it never ends. Looking at the time and looking at the audience's patience, I feel like I can give a rest for now. अगर आपको और थोड़े से डिटेल्स चाहिए या और कुछ वो चाहिए तो then we can discuss. There is a LinkedIn Premium 1 year का अगर लर्निंग करना है आपको तो आप वन मंथ फ्री मिलता. आप पहले अपना let me quickly give an introduction to LinkedIn Premium as well. 1 month जो अब तक यूटिलाइज नहीं करे 1 month फ्री वर्जन वाला, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ अभी मत खरीदिए, आप अभी मत एनरोल कीजिए. What you need to do is you need to first understand the learning path that you can make. एक learning path होता LinkedIn में. नेटवर्क स्लो होना भी कभी कभी बेहतर है क्योंकि रेस्ट मिल जाता. फाइन. सो I am not sure if everyone is following. एक one sided पूरा lecture हो जा रहा. I'm not sure how many of you are attentive towards the if you are listening to me very attentively or not, but I am assuming everyone is following up and everyone is on top of what I'm saying. अगर आप LinkedIn के सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ सर्टिफिकेशन ऑफरिंग्स रहते, कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में रहता और आई एम लुकिंग फॉर, आप कोर्स चूज कर सकते, लर्निंग पाथ चूज करिए क्योंकि जब 1 मंथ का आपके पास पीरियड है ना, वो 1 मंथ में आप बेहतरीन लर्निंग पाथ से पूरा सीख सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन who want to become a data analyst, you can click on this learning path, right? You can click on this learning path where you will see there are totally 13 learning paths और इसका टोटल टाइम कितना है 1 day यानी 24 hours, 24 plus 16 hours, 1 day 16. तो ये तकरीबन आपको 30 घंटे का ये पूरा कोर्स है, राइट? ये पूरा 30 घंटे का जो लर्निंग पाथ है ना, एक के बाद एक आप वीडियो कंप्लीट कर लिए आप तो एक फाइनली आपको एक जबरदस्त सर्टिफिकेट आ जाता लिंक्डइन की तरफ से, एंड दैट विल बी सर्टिफाइड बाय all these from LinkedIn, and at the same time you will learn something amazing. जब आपके पास एक लर्निंग पाथ है तो आप एक के बाद एक ये जब चीजें सीखते तो you can make sure you are good at data analyst to some extent. तो 1 month अगर LinkedIn प्रीमियम का अगर एक्सेस नहीं कर लिए आप अब तक तो यूज कर लीजिए. अगर आपको 1 month का अगर सब्सक्रिप्शन लेके कोई लर्निंग पाथ सीखना है तो भी कर ले सकते. 1 month का बेनिफिट, मगर यूज करने से पहले अपना लर्निंग पाथ को पहले क्लियरली डिफाइन कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या है और टाइम को सही यूटिलाइज करना, क्योंकि द मोमेंट यू ऑप्ट फॉर लर्निंग LinkedIn प्रीमियम, द
the clock starts clicking, right? उसके बाद आपको इस पास 30 दिन है, वो 30 दिन में आपको पूरा लर्निंग पाथ, एटलीस्ट एक लर्निंग पाथ तो आपको मिनिमम कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या टॉपिक्स रह गए? बहुत सारे चीजें हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू give a floor of any possibility of having any question and answers so that we can discuss that here. And I will hand over back to Brother Yasin. Jazakallah khair, Syed Furquan Sahab. Mashallah, the session has been very, very beneficial. I've been following the chat and people asking questions and people commenting on the points, and mashallah, it has been very interactive, as in like the one that you were fearing, it might be one-sided. No, the audience has been keenly and attentively listening to your points, and mashallah, the valuable session, because I'm someone who has a five-star profile on LinkedIn, but even I learned many things over here which I'm not doing, and which everyone can benefit from. Definitely there are a couple of questions, and it's good to answer them. To start with, Sure. like there is a question I think which everyone needs to understand is how can we take 5-star rating? So if you can shed some light on this. Yeah, for completing the 5-star, or what you need to do is you need to first have your clear, क्योंकि LinkedIn जो है वो खुद आपको गाइड करेगा कि कैसा आप एक के बाद एक steps follow करते हैं, right? So the first thing is you need to have your profile picture. It will ask you to create the background, banner, आपका name, आपका headline, वो सारी चीजें अगर है तो then it will move forward and ask you to connect with few people, and then it will ask for you to make I don't actually remember exactly what are the things that needs to complete the 5-star, because it's been so long, I never got a chance to see that 5-star rating, but I guess these are the things, अगर आप एक के बाद एक ये सारी चीजें complete कर लेंगे, then you become a 5-star easily. 5-star के बाद ये सारी चीजें हैं जो मैं बताया, optimization वगैरह, keywords and all. Jazakallah khair. Indeed, LinkedIn itself guides you how you can get 5-star, and inshallah, like this is more than 5-star, and inshallah some very valuable lessons, and inshallah we'll share the recording for people to go through. Even like for myself, because I was hosting and managing the session, I have to go through the recording myself, because some gems were really shared, especially like prompting ChatGPT and how we can utilize that to enhance our resume or enhance our profile, LinkedIn profile itself. Syed Furquan sahab, there was a question like you are talking about technical data analyst, but is these helpful for non-technical professions? Regarding the LinkedIn learning, right? Yeah, LinkedIn, not just LinkedIn learning, but like the tools that we are using, the optimization tools that you mentioned, is it something beneficial for? It's for everyone. It's not just limited to any specific targeted field or something. Everyone can utilize that. Okay. It's for, So everyone can utilize the same tools to enhance their profiles. It does not has to be just technical, even non-technical teachers, educationists, they can utilize the same thing. Also, we have like, which content or copy should we start after resume upload? Like when you are creating the new profile, I'm expecting this is the question around this. Once you upload your resume, like which segment of the LinkedIn profile should we start optimizing? Like, what's your advice on this? You can start optimizing with your headlines first, then your about section, then experience, and moving on to recommendation section, adding the certificates. मैं ये point miss कर दिया, but having the certificates and having the courses shows the recruiter that आप एक ऐसे बंदे हैं जो continuously learning mode में हैं. If you keep learning and if you keep adding your learnings, तो वो जो section रहता ना, वो बहुत attractive रहता. So all whatever the things that you are presenting or that you are preparing for LinkedIn, you can make sure you translate that into your CV. यहाँ पे एक option है. If you click on more, you can save to PDF.
or you can build a resume. There are two options here. If you see, when you say you can, when you build a resume, it will simply give a document of 5 MB. ये जो resume रहता ना, इसको आप अपने benefit के लिए use कर सकते by having all this content that can be applied to your resume. You can download this as PDF. If you see this, I already download this as my PDF. When I go to my downloads, I can open that and it provides me a CV that is downloaded from the LinkedIn. ये देखिए आप यहाँ पे summary आ गया, ये सारी चीजें आ गई. Now what you can do is you can simply copy paste or translate it to the nice look and feel or nice view of a CV जो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक resume है. Kick resume is one of the tools which you can go ahead and check for some nice templates. यहाँ पे आपको templates में, अब देखिए ये एक template है, ये template आप अपनी तरफ से बना ले सकते हैं और इसमें अपना content डाल दे सकते हैं. So that's how you can make sure you can use some examples and you can use different templates and utilize your LinkedIn profile. पहले LinkedIn profile को optimize कीजिए, फिर CV में convert कीजिए उसको. This is something I think what people are expecting. Is that exactly what it was, or is there anything else that I missed? I think that is a good important aspect and good answer for the question, and you have covered many points. There was also one question, like I think like it has come up many times by many people. Is LinkedIn Premium really worth it? Like you have shed some light on LinkedIn Premium. So like, what are the benefits? Is it worth having LinkedIn Premium, or your recommendation around this? Personally, it is not much beneficial for me when I am not utilizing it to its fullest potential. क्योंकि ये थोड़ा सा expensive भी है LinkedIn Premium. और एक चीज ये है कि जब अब क्योंकि मेरे पास LinkedIn Premium है, the reason why I purchased this is two reasons. एक मैं क्योंकि आज का सेशन देना था, कल ही मैं परचेस करा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सही चीजें प्रेजेंट कर सकूं और बता सकूं, क्योंकि मेरी सर्च लिमिट खत्म हो गई थी. मैं अब बंदों को अगर सर्च करूं तो मेरा प्रोफाइल जो है वो it was not giving me good results. I also have one requirement from my company or from my job related to finding some profiles from potential profiles or from some SMEs, subject matter experts को ढूंढने का मेरा एक job responsibility है जो recently मेरे role पे आया. तो मैं सोचा कि let's take LinkedIn Premium for this. That can also benefit for this session today, and it can also help me in my work. So मेरा एक specific requirement था, इस वजह से मैं LinkedIn Premium लिया. फिर what I thought is, जैसे ही मैं LinkedIn Premium लिया, मैं अपना एक goal set कर लिया कि मेरे को अब ये complete LinkedIn learning path जो है वो complete करना है. So when you are using it with its fullest potential and when you have a targeted set of requirement, only then go ahead and purchase it. Otherwise don't. आप फ्री में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्री वर्जन में बहुत कुछ कर सकते हैं, यकीन मानिए. Mashallah, like most of the session was covering experienced people. So what is your advice for freshers, like someone who is fresh in the market, how they can benefit from LinkedIn? I usually have some dedicated sessions for interns as well. जैसे hashtag है, hashtags बहुत important है. Internships, freshers are someone who keep looking for internships, right? When you click on #internship and when you look for some job posts, some post here, यहाँ पे देखेंगे आप, ये फिर मैं इसको narrow down कर ले सकता हूँ. अब internship है, मेरे को वो internship हर जगह नहीं होना, मेरे को एक particular locations पे होना, right? So what I will do is I can say posts first of all. पहले तो मेरे को post चाहिए, और वो posts जो अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं फिर narrow down करके उसको इंडिया कर लूँगा. This is somewhere from some I think this is from India. It's a little slow. Now what I'll do is I will sort by date post, content type, from member.
Let me see all filters. Location का option कहाँ पे है? That filter is not available anyways. So you can simply search for internship. Post देखिए अगर कोई internship आपके लिए suitable है तो वो go ahead and apply for that. Simple. और बहुत सारी चीजें हैं for specialists, for freshers. We have decided to conduct some sessions for the college graduate students as well. Inshallah that has been pending since long. मेरे को टाइम नहीं मिला तो उसके ऊपर प्रिपरेशन थोड़ा सा पेंडिंग ही रह गया. बट फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो freshers कर सकते on LinkedIn. Jazakallah khair, Syed Furquan sahab. There was also regarding the extensions of the TEED, and I think you have already shared that in the document. Google form, right? Yes, yes. I already shared that here in this document. Wonderful. आप सब एक कॉपी ले लीजिए याद से इसकी एक फाइल मेक अ कॉपी. You can also download it, file download, and download a certain type of the file, Word or PDF document on your Yes. same platform as well. Right. Mashallah, like the response has been so good. Like some of them, they have been asking if you can review their profiles, and I'm not sure if you provide this service to people, because mashallah, like just I think like if you cover just the audience profiles and review them, that will take like probably weeks of your time, subhanallah. But people have been very eager to, because you are someone who has expertise in this and you are reviewing, and mashallah, you have shared lots of input today. I think, do you provide such services where you can review people profile? Also, you can take certain time to share what other services you provide for people to, and where they can find these services. Yeah, I run a community called Last Adventures, क्योंकि Last Adventures मेरी कंपनी है, उसके community में तकरीबन 1500 लोग हैं, and people keep asking for me whenever I find time. If I find time, I just go ahead and review or give a quick comments on that. वैसे मैं अपने आप को expert तो नहीं बोलता. I'm not an expert. Honestly, I'm not an expert. All I do is जो भी मैं थोड़ा बहुत सीखा या जो भी मेरे पास knowledge है, बस उसके हिसाब से मैं review कर लेता हूँ. Yeah, if I find time and if I can do it, inshallah I can, not a problem. Doctors be here, ladies be here, Jazakallah khair, Syed Furquan sahab. With that, we come to the end of the question and answer sessions, and we would like to remind everyone that they can download the questionnaire. The link is shared in the chat. Also, we would request a short feedback from everyone once the session is done. So you can just click the feedback form right now. So the link is available, and we would love to hear feedback. This will help us. This will help TNRIF to arrange more better platforms, more better sessions, inshallah. Also, it will help Syed Furquan, our trainer for today, to improve his training, or if there is any feedback points or any advices. So please utilize this link to help us to help the community better, inshallah. With that, I would like to invite our... Sorry, Brother Yasin, can we have a chat with the direct interaction with participants? We'll take 5 minutes just to interact with participants. If they have any questions, let them raise their hands. We'll allow them, inshallah. Just 5 minutes for them, inshallah. After that, we can take vote of thanks. Definitely, Brother Imtiaz. Actually, I have raised this if anyone want to raise their hands, but no one had raised until now. So we can definitely take some. Yeah, we have a couple of members now. Yes, Mohammed Farooq, please go ahead. We need to unmute him. I think you can do that. Hello, Assalamu alaikum, Mr. Furquan. How are you? Good? Yeah, just my question is that most of the time what we used to do means we apply for a, like, we send in a CV to apply for a job in the LinkedIn, but most of the time we won't get any response from the recruiters.
So may I know what's exactly the reason why we are not getting any response from the recruiters? Yes, as I said. Is there any? Yeah, I got your question. Is there anything you want to add? Yeah, that's it. To more Okay. interactive, like how to get the response from the recruiter. Absolutely. This is one of the most painful point for everyone, including me. Even I used to send a lot of connection requests, a lot of job applications. Easy apply भी एक होता है LinkedIn पे जो आप easy apply करते, but you will not hear back from recruiters anytime, anywhere. Right? Most of the times this is frustrating and you don't even feel comfortable that and आप अपने आप के अंदर ये सोचने लगते हैं कि आपके पास या आपके अंदर कोई कमी है या ऐसा है. बट द थिंग इज जॉब मार्केट का बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अलग है जॉब मार्केट का कंडीशन और जॉब मार्केट जिस तरह से वर्क करता और रिक्रूटर्स जिस तरह से वर्क करते. दे पोस्ट द जॉब, दे अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं रिक्रूटर हूँ, मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट आया, मैं लिंक्डइन पे इजी जॉब पोस्ट अप्लाई कर डाल देता हूँ. एट द सेम टाइम वो रिक्वायरमेंट मैं अपने नेटवर्क्स में भी डाल देता हूँ. Or after putting that all the requirements in my networks and everywhere, I get to hear from someone from the network itself. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस जाऊं और लिंक्डइन पे जो लोग अप्लाई करे उस पे वो चेक भी करूं. I don't even go ahead and check those sometimes. हाँ, it's not always true. Sometimes I might go ahead and check. Sometimes some recruiters regularly do that, and there is a chance that your profile is not so attracting. अब job description एक है और आपका CV कुछ और बोल रहा, और यानी तो कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गए या कुछ ऐसे CVs आ गए जो आपसे ज्यादा बेहतर है, तो डेफिनेटली they will not consider. This is why having a strong network will help. जॉब मार्केट बहुत गंदा है, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा टफ है. एवरीवन फेस दिस इशू. कई सारे लोग बोलते हैं सर देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विथ माय CV और देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विथ माय स्किल्स और समथिंग. अपने आप पे क्वेश्चन करने लगते, बट दैट्स नॉट द केस. एवरीवन इज फेसिंग दैट, एवरीवन इज फेसिंग दिस. मैं जैसे बोला आपको 250 जॉब एप्लीकेशंस पे सिर्फ 6 इंटरव्यूज कंडक्ट होते, तो जस्ट इमेजिन यू कैन बी वन ऑफ देम. तो ये है, हम अपने आप को इसीलिए पूरी कोशिश करना है कि 360 डिग्रीज एंगल में completely we make sure we are doing everything. Hope that answers the question. Furquan sahab. I would request everyone to keep it short and simple, the questions. We have Nag A. You can go ahead. Sir, Assalamu alaikum. Sir, right now I'm working in UK HSBC. Okay, I have 13 years of experience in total IT and 8 years in DevOps. Okay, and I have this doubt actually. If you are keeping open to work, if I am starting the work, will it be helpful, and how much it will be helpful? See, open to work, there are two things in open to work. Either you can post a open to work का जो वो green color का वो symbol आता वो रख सकते, या you just keep the open to work open without the badge. So I usually prefer not to put the open to work badge अगर आपके पास, because it will not give a good impression for your current employer that you are looking for another job or something. अगर वैसा कुछ doubt है तो मत रखिए. Otherwise keeping it is not a problem. You can do that. You can put the badge as well. Thank you very much. We have Altaf Sheikh. Please go ahead. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, what's the opportunity for a fresher? As of now, I'm a Power Platform developer. So still I'm not uploaded the resume. So please guide us. Yeah, you have to make sure your LinkedIn profile is optimized. Whatever I have guided today, you can follow those steps. अगर recording देखना है तो recording देख लीजिए. Then make sure your CV is updated, and then start applying, inshallah. Good luck. Thank you very much. We have Qadar M. Please go ahead.
Adaram, you're unmuted. Please ask a question. Okay, with that, we come to the end of the question answer session. We don't see anyone else raising their hand for now. Great. Fine then, Agar, if we are done, then we can conclude. I request everyone to share your feedback. Please utilize the feedback form. We are down to the last 10 minutes, and we would like to invite our Vice President, Mahmoud Misri, for a few words of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Brother Syed Furquan Ahmed. On behalf of Telangana NRI Forum, I would like to express our heartfelt appreciation for the information and engaging session you delivered on in LinkedIn and how to effectively secure a job. And Alhamdulillah, and your expertise in the subject matter was evident throughout the session. And it was inspiring to witness your passion and commitment to helping others excel in their careers as well as their whatever the problems comes in the job market. Thank you very much. The insights and practical tips you have shared were invaluable, and it cannot be given to anyone, and it will undoubtedly benefit for our audience in their job market. Alhamdulillah, we greatly appreciate from Telangana NRI Forum, and we salute to our president and founder, Mr. Abdul Jabbar, who has taken initiative for making a streamline on LinkedIn, WhatsApp, and as well in the YouTube and Zoom meeting. So it is a great effort by Mr. Abdul Jabbar, and I thanks all the team members, especially Mr. Imtiaz, as well as whoever joined the meeting. Thank you very much. And Alhamdulillah, with very myself with appreciating to Brother Furquan Ahmed. Alhamdulillah, it's really very good, and it was a great session. And moreover, your emphasis on personal branding and advanced job search techniques were particularly enlightening and provided our audience with a fresh perspective on job hunting in today's competitive market. We are grateful for your commitment for empowering individuals and enhancing their professional development. Your dedication to helping others, it is a really great effort, and Alhamdulillah, it's a sabka jariya also. So Alhamdulillah, as a Telangana NRI Forum, we salute you, Mr. Furquan Ahmed, Brother Syed Furquan Ahmed. Thank you very much. And Alhamdulillah, I am in India from Hyderabad. I am watching, and it's really globally, which we are all of us taking initiative and joined. It's more than 100 members, and really it's a grateful, and we'll keep it like this sessions. So at least from every session, if some people who will get the job, Alhamdulillah, it is a benefit for everyone. So thank you very much, Syed Brother Furquan Ahmed. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. It was a pleasure to talk to you all. Thank you so much. Thanks for giving the opportunity to share my knowledge. Walaikum assalam. Thank you very much, Mahmoud Misri, and thank you very much, Syed Furquan Sahab. And definitely thanks to Mr. Abdul Jabbar for taking this initiative, leading this platform, and assisting in Telangana NRI Forum works and taking the work ahead. So before we end, inshallah, we'll have dua for ending congregational gathering. How far from imperfections you are, O Allah, and I praise you. I bear witness that none has the right to be worshipped except you. I seek your forgiveness and
turn to you in repentance. May Allah accept our efforts, accept our work, and may Allah benefit people from this session and create more job opportunities for everyone that is involved. And even like this is a very good session for everyone to update their resumes, take action, as Syed Furquan Saab has mentioned. You need to take action on this knowledge and benefit from it. And inshallah, qadar Allah, within the near future, you will all benefit from updating your LinkedIn profiles and taking these initiatives in growing your network and upgrading your profile. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Brother Yasin and Brother Furqan, and all the participants. I'm really thankful for all of your sparing the time, and hope this session was very valuable, and it's a great. And hope inshallah you will be in touch with us, and for upcoming any such events and beneficial for the people, hopefully for the community, definitely we'll invite you and keep in touch. Thank you very much. Jazakallah khair. Jazakallah khair everyone for joining with us. Brother Syed Imran, do you have anything to say? I think he's closed. Jazakallah, Brother Furqan, for a great initiative for organizing on a subject, especially for the job requirement. It's a very challenging nowadays. And we look forward to have such kind of sessions in the near future, which help us, our brothers, especially the Telangana people and the rest of the people. So we look forward for more kind of sessions in the near future. Jazakallah. Yeah, Brother Imran is our Eastern Region in charge of Telangana NRI Forum. Thank you very much, Brother Imran, and for your sparing time and your participation. And a special thanks to Brother Imtiaz and all of these things, and Brother Faiz and all our coordinators who has successfully participated and make this event successful, and all the participants who has attended this event. Bottom of the heart, I thankful for everyone, each and everyone. Thank you. Yeah. So we end up now.